की बारे में मतलब कैथोड रेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और एनोड रेस के लिए बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड काफी सारे एनिमेशन आप इस लेक्चर में आगे देखेंगे। तो एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके का है इस बारे में साइंटिस्ट मतलब शुरू से ही सोचते रहे। इलेक्ट्रॉन्स वगैरह डिस्कवरी या प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बहुत बाद में हुई और आप लोगों को पहले पता है, लेकिन एटम का जो स्ट्रक्चर है वो मतलब किस तरीके से आपका साइंटिस्टों ने सबसे पहले डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी, उसमें कहा कि भाई एटम जो एवरी मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है और जो एटम है वो आपका सब सब्सटेंसेस के सेम होते हैं, मतलब किसी एलिमेंट के जो एलिमेंट्स एटम्स हैं वो सारे सेम होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम है वो सब प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होंगे, ठीक है, एटॉमिक मास, रेडियस, साइज वगैरह में। तो इस तरीके की थ्योरी थी और उससे आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वगैरह एक्सप्लेन हो सकते हैं, लेकिन उसमें मतलब थ्योरीज में जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसमें कुछ कुछ कमियां थी, ठीक है, जिसके बेसिस पर हमने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बनाई। आज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी देखते जैसे डाल्टन ने एटॉम को माना था इंडिविजिबल है, लेकिन आज हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ा सकता। डाल्टन ने कहा था कि भाई एटम की जो है आपके एक ही एलिमेंट के सेम होते हैं, लेकिन उसमें आज की तारीख में हम आइसोटोप्स जानते हैं। तो डाल्टन ने ये भी माना था कि भाई जो आपके एटम्स जो होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन आइसोबार में जो एलिमेंट ठीक है डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं लेकिन उनके मास नंबर सेम होते हैं। तो ये सारी चीजें थी। तो बहरहाल कोई भी हम चीज सोचते हैं ठीक है उससे कुछ एक्सप्लेन हो जाता है, लेकिन कुछ एविडेंस नहीं है। तो सबसे पहले कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो इसमें जो है आपका विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक। इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर की कंडीशंस ली गई थी, तो उसको एक फ्लोरेसेंस दिखाई दी, यहाँ पे कुछ फ्लोरेसेंस रेज जा रही, ठीक है। ये जब रेज उसको दिखाई दी और इनकी फिर उन प्रॉपर्टीज की भी स्टडी करी। प्रॉपर्टीज की आपने स्टडी इस तरीके से करी कि भाई इनके रास्ते में कोई पिन व्हील रखा, उस पिन व्हील को रोटेट कर देते हैं। इनके जो रास्ते में क्या नाम की आपका कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, उसकी शैडो क्रिएट कर देते हैं और आपका जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट रखा तो इसकी शैडो बनाई, इस पर चल रहा है और काइनेटिक एनर्जी है यानी कि इनमें मास है। और आपका यदि किसी हैवी मेटल पे हम लोग इसको कैथोड रेस को पास करते हैं तो उसको हीट भी कर देती है और एक्स रेस के प्रोटॉन भी आपके देती है। तो ये सारी साइंटिस्टों ने इनकी प्रॉपर्टीज की कैथोड रेस की स्टडी करी। उसके बाद जो है जे और रेज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाए तो ये आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, कैथोड रेज जो है। और मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होती हैं। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड में अपने मतलब इस तरीके डिफ्लेक्ट होती है कि इन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये भी प्रूव हो गया नेगेटिव चार्ज। और जे थॉमसन ने क्या करा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगाए और इसका जो डिफ्लेक्शन है उसको इक्वल कर दिया, ठीक है, डिफ्लेक्शन जो है खत्म कर दिया। तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्सेस दोनों को इक्वल करके E/m की वैल्यू निकाल ली कैथोड रेस के लिए। ये वैल्यू है आपकी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो कांस्टेंट आती है और ये इसमें आप हाइड्रोजन भरे, नाइट्रोजन भरे, ऑक्सीजन भरे, कोई भी भरे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। कैथोड रेस की जो E/m की वैल्यू है वो किसी पे मतलब नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो अब आप आगे जो एक्सपेरिमेंट देखेंगे उसमें कैथोड रेस का एक तो लैब में
किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही हैं वो शो करा गया है। एनिमेशन भी कैथोड रेज का शो करा गया है, इन प्रॉपर्टीज के बारे में। और जो है मिलिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी है। मिलिगन ने क्या करा था कि आपका इलेक्ट्रॉन के वे जो चार्ज है उसको कैलकुलेट करा था, ठीक है। उसमें भी उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाए थे, तो वो भी आप देखेंगे। और उससे चार्ज निकाल लिया था इलेक्ट्रॉन पे, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आया था 1.6 into 10⁻19 कूलम। तो इसके बेसिस पर इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करा था, दैट इज इक्वल टू 31 kg के करीब आया मास आ गया। जब आपको ई बाई एम की वैल्यू पता है, ई भी पता है, एम भी निकल आएगा। तो ये कैथोड रेज वगैरह के बारे में डिस्कवरीज हुई थी। Okay, this is a cathode ray tube. What it essentially is, it's a vacuum chamber. There are no gases inside this glass tube. The only thing we have are two electrodes, one's called the cathode, the other's called the anode, and a fluorescent screen in the background. It's coated with some type of fluorescent material. When I turn the power supply on, we'll see a beam that causes that fluorescent screen to glow. Looks like a nice straight line, doesn't it? We call that a cathode ray because it emanates or begins at the cathode and shoots across over to the anode. J.J. Thomson was working with cathode rays. We really didn't understand what they were. I mean, we have electricity going in one side and coming out the other, but there's nothing inside to conduct it. It's a vacuum tube. So he decided to apply a magnetic field to this cathode ray, and he found something interesting. We apply one pole of the magnet to this beam and we'll see what it does, and then we'll flip it around and see what the other pole does. This is my favorite part. Can you see what's happening to that beam? What does it appear as though it's happening to it? It's moving. It's moving, it's being repelled, isn't it, by the magnet. When we flip the magnet around, and what do you think is going to happen this time? Well, if it's being attracted on one pole, see how it's being attracted there? Let me rotate it so the kids on this side of the room can see it. See how it's being attracted there? And then the other pole, do you see how it's being pushed down? What does that tell me about that beam? It has a what? It has a charge. Let me tell you about the poles of the magnet. The one that pushes it away is the negative pole. So what does that tell you about the charge of those particles? Negatively charged particles. And J.J. Thomson was actually able to do a charge to mass ratio of these particles, and he found that these particles were about 2,000 times lighter than a hydrogen atom. Now at the time that was very profound. What did Dalton say? Are there any particles smaller than an atom? J.J. Thomson just found something 2,000 times smaller than a hydrogen atom. Why is the hydrogen atom and something 2,000 times smaller than it so profound? Hydrogen. Because hydrogen is the smallest atom, isn't it? So if we found something 2,000 times smaller, we have found our first subatomic particle. And it's called the electron. Okay, that'll work. Discovery. William Crookes discovered cathode rays when he was studying electrical discharge in gases, whereas J.J. Thomson discovered that the cathode ray consists of negatively charged particles called electrons. Production. Cathode rays are produced in a discharge tube. Hence, the discharge tube is generally referred to as the cathode ray tube. The cathode ray tube is a partially evacuated glass tube with cathode and anode placed at the ends of the tube. A vacuum pump is used to partially evacuate the tube. The cathode is connected to the power source with the help of a clip. The tube is supported on a stand. It was found that electric discharge through gases took place only when the pressure inside the tube is lowered and the potential difference between the electrodes was high.
To produce cathode rays, high potential difference of 10 kV to 20 kV is applied between the electrodes and the pressure is reduced to 0.0001 millimeter of mercury by means of a vacuum pump. A glow is seen on the walls of the glass tube. The bright fluorescence glow is due to the striking of the rays emitted by the cathode. These rays are cathode rays. Properties of cathode rays. Cathode rays travel in straight lines. When an opaque object is placed in the path of the cathode rays, a shadow is cast on the glass wall opposite to the cathode. This shows that cathode rays travel in straight lines. Cathode rays consist of negatively charged particles. The rays deflect towards the positive plate when the tube is exposed to an electric field. This is because the negatively charged particles in the cathode rays get attracted towards the positive plate. Cathode rays are deflected by the magnetic field. When the tube is exposed to a magnetic field, the cathode rays follow a curved path, showing that they are deflected by the magnetic field. Cathode rays produce X-rays when they impinge on a metal with a high atomic weight. Cathode rays travel with a high speed almost equal to the speed of the light and hence possess kinetic energy. When cathode rays are made to fall on a paddle wheel, the wheel starts rotating, showing that the rays possess kinetic energy. A cathode ray tube is the forerunner of the television tube. It is a glass tube from which most of the air has been evacuated. When the two metal plates are connected to a high voltage source, the negatively charged plate, called the cathode, emits an invisible ray. The cathode ray is drawn to the positively charged plate, called the anode, where it passes through a hole and continues traveling to the other end of the tube. When the ray strikes the specially coated surface, the cathode ray produces a strong fluorescence or bright light. When an electric field is applied across the cathode ray tube, the cathode ray is attracted by the plate bearing positive charges. Therefore, a cathode ray must consist of negatively charged particles. We know these negatively charged particles as electrons. A moving charged body behaves like a tiny magnet, and it can interact with an external magnetic field. The electrons are deflected by the magnetic field. As expected, when the direction of the external magnetic field is reversed, the beam of electrons is deflected in the opposite direction. In 1897, J.J. Thomson, an English physicist, determined the charge-to-mass ratio of an electron. He adjusted the electric field so that the electrostatic deflection, theta E, was the same as the magnetic deflection, theta B, and was able to calculate the charge-to-mass ratio of an electron using the following equation, where E is the applied electric field, theta is the angle of deflection, B is the applied magnetic field, and L is the distance traveled by the cathode rays. Thomson determined the charge-to-mass ratio of an electron to be negative 1.76 times 10 to the 8th coulombs per gram. So, कैथोड रेस की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्टों ने एनोड रेस की भी डिस्कवरी करी. ये आपका नेगेटिव. इसमें जो है कैथोड रेज में साइंटिस्टों ने ये जो आपका था कैथोड परफोरेटेड ले लिया, यानी कि इसमें छेद हो गए. और यहां पर भी वही कंडीशन लगाए, लो प्रेशर, जैसे 10⁻⁻2 रेंज का और mmHg, और यहां पर हाई वोल्टेज. तो यहां पर भी कुछ
कुछ और पीछे आपने जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी जिससे कि आपको चीजें नजर आ जाए। तो यहां पर से भी कुछ रेस आई, ठीक है, नेगेटिव की तरफ ही आई, और इन रेस को हमने एनोड रेस या कैनल रेस कहा। ये आपकी जो एनोड रेस हैं, इनमें क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो पता चला पॉजिटिव चार्ज है, और इनका जो है आपने मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट करा तो उससे भी पता चला कि भाई इन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से इन्होंने डायरेक्शन ली। और आपका जो है ये मतलब हीटिंग इफेक्ट भी शो करती हैं, और काइनेटिक एनर्जी भी है, और फ्लोरेसेंस भी है। उसके बाद जो साइंटिस्टों ने इसमें इंपॉर्टेंट बात डिस्कवर करी कि इसका जो E/m की वैल्यू है, ये कांस्टेंट नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। ये गैस की नेचर पे डिपेंड करता है कि इसका E/m की वैल्यू क्या है। तो E/m की वैल्यू जब इसके लिए कांस्टेंट नहीं है तो साइंटिस्टों ने फिर दिस और सबके लिए करा, तो हाइड्रोजन के लिए लाइट टेस्ट आया, और आपका जो है इनके लिए आपका जो और एटॉमिक है, हीलियम है या उससे आगे इंक्रीज है, E/m की वैल्यू लगातार डिक्रीज करती जाती है। तो आप लोग ये सोचिए कि भाई जो है इनके लिए कैथोड रेस के लिए E/m की वैल्यू कांस्टेंट थी, पर एनोड रेस की ये कांस्टेंट क्यों नहीं थी, ठीक है। तो इसमें यदि आप हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो प्रोटॉन होगा, ठीक है, ठीक है, एनोड रेस में, क्योंकि भाई एनोड रेस में हाइड्रोजन के एटम में क्या है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और एक 0 न्यूट्रॉन है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करें तो क्या बचेगा आपका, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन बचेगा। टेस्ट पॉजिटिव को हम प्रोटॉन भी कह देते हैं। तो इसलिए आपने प्रोटॉन की E/m की वैल्यू और वो सब साइंटिस्टों ने स्टडी करी। लेकिन ये आप सोचिए कैथोड रेस के लिए क्यों नहीं कांस्टेंट है और एनोड रेस के लिए क्यों नहीं। तो अभी आप एनोड रेस का एनिमेशन देखिएगा, उसके बाद जो है हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे और एक दो क्वेश्चन लेंगे। E. Goldstein constructed a special tube known as a canal ray tube. These tubes usually have two chambers, which are separated by a perforated metallic disc severed as cathode of the discharge tube. The space between anode and cathode of the discharge tube contains a small number of residual gas molecules. The anode and cathode are supplied with high voltage. The electrons emitted from the cathode collide with the residual gas molecules. These collisions knock an electron out of each gaseous atom, generating positively charged ions, which are accelerated towards the cathode, and they pass through the holes in the cathode, producing a beam of positively charged particles on the back of the cathode. As the positively charged particles pass through the holes or the canals in the cathode, they are called canal rays. W. Wien succeeded in deflecting the canal rays. He made one small circular hole in the cathode and introduced two plates behind the cathode. When a strong electric field is applied between the plates, the particles are attracted towards the negative electrode, so that these are positively charged particles. Therefore, these are often called as positive rays.
Hi everyone. So we're going to continue here with our discussion on the history of the nuclear model of the atom. Remember in the previous video we talked about how the electron was discovered by J.J. Thomson and the experiment with the cathode ray tube. In this video we're going to spend some time talking about how we discovered the charge and mass of the electron, and this was an experiment that's performed by Robert Millikan. So here's a brief summary of what Thomson did and what we talked about in the previous video. But basically at the end of his experiment he discovered that the cathode ray is composed of negatively charged particles, which was later called electrons. Now, one thing that I want to describe a little bit is that Thomson was able to determine something called the charge to mass ratio of the electron to be a certain value, which is given here. And this should be actually negative number here. But the value is negative 1.76 times 10 to the 11th coulombs per kilogram. So let me just mention what this charge to mass ratio is. So you remember that in the cathode ray tube experiment, what he was able to do was he was able to influence the direction of the cathode ray, in other words, bend the cathode ray by applying an appropriate magnetic or electric field outside. And so the degree of bending, he concluded, because these are composed of particles, he concluded the degree of bending will depend on how heavy the particle is, which is the mass of the particle, and then because the particles are negatively charged and they interact with these positive and negative electric field, then the degree of bending will also depend on the charge of the particle. So in other words, both mass and charge will influence the degree of bending of the particle, of the electron. Unfortunately, with the type of instrument that he was able to use at the time, he wasn't able to determine what is the exact mass and charge of the electron itself. But what he was able to do was he was able to use experiment to determine the mass, the charge to mass ratio. So in other words, the actual, the charge divided by the mass was what he was able to determine, and that's what this number represents, negative 1.76 times 10 to the 11 coulombs per kilogram. Coulomb is a unit for charge. Now if you look at this number, you notice that it's a pretty big number, right? 10 to the 11 is a big number. So that implies something about the electron. The electron must be a particle that has a relatively small mass, right? Because this is a charge to mass ratio, the mass is at the bottom, the denominator. The mass must be a really small mass, yet the charge is, with respect to the mass, is a fairly large charge, okay? So the question then from here on is, what exactly is the charge and what exactly is the mass of an electron? Because if we really want to know how the electron works, we need to know those two properties individually. We can't just use the charge to mass ratio, because that doesn't provide us with exactly what is the charge and what is the mass of the electron. So now we're going to move on to Millikan's experiment, which is often called the oil drop experiment. And this was the experiment that ends up showing us, allowing us to calculate what is the mass of the electron, because he was able to use this experiment to determine the charge of an electron. So let me describe the setup of the experiment really quickly. The way Millikan did this was the following. So he started with a setup that looks like this. So there's a chamber here. Inside the chamber there's two electric plates. One is positively charged, the other one is negatively charged. And he has basically kind of a power source of some sort that allows him to control the voltage that's exerted by this charge plates. Okay, so he can he can basically control how much voltage difference there will be in between these two charge plates. So what he did was he had a canister here, or a can containing oil, and then the oil is being sprayed, and when it comes out of this spray, it becomes these small drops of oil. So this is very similar to if you're using something like a WD-40 or something, when you're spraying it, or when you're spraying anything, you have a can and then you spray out, the substance comes out as drops. So the drops, as you'll see in this animation, the drops, once it's sprayed out from the can, would just drop down to the bottom because of gravity. Okay, so all the oil droplets have a certain mass, and they're just going to fall down to the bottom because of gravity. And in the first part of the experiment, what he did was he just wanted to know what is the mass of these oil droplets. So he used
kind of classical physics calculation using Newton's equation to determine what is the mass of each of these oil droplets. Okay, and then the next part of the experiment is the following. So you see that oil droplets just falling down to the bottom because of their masses, right? So at this point, the only force acting, so if you think about the force acting on these oil droplets, is just gravitational force. So the only thing that's happening to these oil droplets is being, going down to the bottom because of attraction to the center of the Earth. Okay, now once he did that first experiment to figure out the mass of the oil droplets, the second part of the experiment was then he had an X-ray source, which is then shine onto the this part of the chamber, and this part of the chamber contains air. So when X-rays shine on the air around the oil droplet, what happens is then the electrons on air would be ionized. In other words, I should say the air would be ionized, and what that means is the electron is kicked out from air, and because the electron can't just float around, it jumps onto the oil droplet that's falling down. Okay, so let me just show you in terms of animation what happens there. So he's shining this X-ray, and you can see it through the microscope here. It's gonna what's happening to the oil droplet. So when the you can see here that it's marked as negative. The reason is because the air, the electrons from air around this, which has been ionized by the X-ray, then jumps onto the oil droplet, and there's variable number of electrons that are going to be on this oil droplet. So you might have 10 electrons here, you might have 20, you might have 100. So different numbers of electrons are on each oil droplet. Okay. Now, what's interesting, of course, now is that you notice what happens here. He starts to turn on this voltage, which, remember, controls the strength of these electric field that's exerted by these two plates right here, these positive and negative plates right here. And you notice what happens as he does this to the oil droplet. So watch what happens there. Okay, so you notice what's interesting is that first off the oil droplets slow down, and then at some point the oil droplets start to move up, right? And so what's happening there? Well, remember what he did here was he turned on that electric field. So this plate is negatively charged, this plate is positively charged. So because these oil droplets are negatively charged because they have electrons on them, they're going to be repelled by the negative plate and attracted by the positive plate. So at some point they start to move up, and they're only going to, but remember, they have to fight gravity, right? So gravity is pulling them down, but this electric force is pushing them up. So there's a point, if you control this voltage appropriately, there's a point when what? When the droplet is exactly suspended right in the middle, because that's when the gravitational force, which is pulling this thing down, and the electric force, which is pushing it up, is exactly balanced with each other. And that's actually an important condition. When you have that condition, you can then determine how much charge is on each of these droplet, or in the droplet that's suspended. Okay, let me show you how this happens. So the first thing to realize is, what is the force due to gravity? Well, it's just given by this equation, m times g. In this particular class, because we're talking about chemistry, you don't really need to know this at this point. This is a physics equation. I'm not expecting you to be able to make any calculation with it, but you do need to know that the gravitational force in this case is given by m times g. M stands for the mass of the oil droplet. G is just the acceleration due to gravity, which on Earth has a constant value. Okay, now remember that when the oil droplet, he turns on that electric field, you have this other force that counteracts the gravity force, which is the electric force, and the electric force is given by this equation, Q times E, where Q is the charge of the oil droplet and E is the size of the electric field that's given by those two plates right there. Okay, remember that when the oil droplet is exactly suspended in the middle, the two forces are equal to each other. So Q times E is equal to m times g. Now remember, what he wants to determine here is the value of Q, which is the charge
on the droplet. So if he knows all these three, which he does, he knows this because that's a constant. He knows the mass of the oil droplet. He could measure that. He knows the E because E is what he controls using that box earlier that I was showing you. He controls it using this. So as a result, he knows all these three components, so he can use that to calculate Q. And Q, of course, is the charge of all the electrons on the oil droplet. Now, when he did this for a bunch of different oil droplets, he found that the Q that he got from making all those calculations is always a multiple of this number right here, which is 1.6 times 10 to the minus 19 Coulomb. Okay, so in other words, he might get something that's 10 times this number, something that's 20 times this number, or something that 100 times this number. So what that tells him, that point, is that this value must be equal to the charge of one single electron, because we can have, remember, a lot, different number of electrons on the oil droplet. We can have 10, we can have 20, we can have 100, but if all those numbers are always a multiple of this number, this must be the charge of just one electron, because everything else is 10 times one electron, 20 times one electron, and so on. Okay, now once he was able to determine that this is the charge of one single electron, he then can go back to the charge to mass ratio that Thomson figured out from his cathode ray experiment. This is the charge to mass ratio, and then this is the charge value, and using dimensional analysis you should be able to figure out the mass of an electron. Okay, in fact, I'm going to leave that as your homework. Okay, so figure out the mass of a single electron using the charge to mass ratio and then the charge that Milton figured out. All right. तो कैथोड रेज के लिए जो हम डिस्कस कर रहे थे कि E/m की वैल्यू कांस्टेंट आ रही थी, एनोड रेज के लिए कांस्टेंट क्यों नहीं आई? देखो, आज की तारीख में आप एटम का स्ट्रक्चर जानते हैं कि भाई ये न्यूक्लियस है, इसमें आपका प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, अब आपने दो हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रोड लगाए, ये मान लो नेगेटिव लगा दिया, ये पॉजिटिव लगा दिया कैथोड एनोड, तो आपका नेगेटिव जो है वो इधर चला जाएगा, पॉजिटिव पार्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो कैथोड रेज में क्या थे? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, तो उसमें जो एयर थी उसको आयनाइज करा गया था, और एनोड रेज में क्या थे? आपके न्यूक्लियस थे। तो सभी के न्यूक्लियस का चार्ज अलग है, मास अलग है, सबके लिए E/m की वैल्यू अलग आनी ही आनी थी, और इलेक्ट्रॉन सभी सबस्टेंसेस के सेम है, तो कैथोड रेज के लिए E/m की वैल्यू सबके लिए सेम आनी थी, कांस्टेंट। ठीक है, यस, ये आपका एक IIT में आया क्वेश्चन है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लोएस्ट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ E/m वैल्यू चार्ज अपॉन मास रेशियो, प्रोटॉन और आपका इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो क्या आपका आंसर होगा इनमें से? देखो, न्यूट्रॉन में क्या होता है आपका 0 और 1, 0 चार्ज होता है, 1 मास होता है, इसके लिए E/m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0/1 यानी 0। अल्फा हीलियम न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, तो 2 और 4, तो 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो है प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है? हाइड्रोजन एटम के इक्वल ही होता है मास। ठीक है, तो ये प्रोटॉन क्या है इसको, तो आप इसका रख देंगे E/m 1/1। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए E/m की वैल्यू क्या होगी कि आपका उसका जो मास रेशियो होती है इलेक्ट्रॉन के मास में डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये आपकी 1/1837 होती है। तो इसको आप रख सकते हैं E/m इसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए आपका और इलेक्ट्रॉन, ये आपका चार्ज 1 है और ये 1/1837 है। तो सबसे कम आपका न्यूट्रॉन के लिए, उसके बाद अल्फा के लिए, फिर प्रोटॉन के लिए, फिर इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए आपका डी। तो जे.जे. थॉमसन ने आपका जो है इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर अपना मॉडल प्रपोज करा था, और इसे आप वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं। तो उसमें बताया था कि जैसे वाटरमेलन होता है, ठीक है, उसमें सीड्स होते हैं, तो वैसे ही नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज जो है आपका ये आपका इस तरीके से एटम के अंदर फैला रहता है। ठीक है,
तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, जो मतलब तरबूज में एडिबल पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, एंड सीड्स आर नेगेटिव चार्ज। तो आज की तारीख में आप लोग ये जानते हैं कि भाई रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट, ये मॉडल है, वो गलत है, और ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन इसमें एक सही बात है, ठीक है, जिससे मतलब इसने कहा एटम, मतलब सब जानते हैं न्यूट्रल है, और उसके बाद एटम के अंदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, और जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। तो ये एक आपकी बात है जो आज तक सही है, और हम लोग इसी से आगे बढ़ते हैं। तो मॉडल्स जो है, एटॉमिक मॉडल जितने भी आप आगे बढ़ेंगे, रदरफोर्ड, बोहर, सब में कुछ कमियां होती हैं, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन कमियों से ही चीजें फिर इम्प्रूव करके हम लोग आगे बनाते हैं। जैसे मोबाइल फोन्स आप देखते हैं, मोबाइल फोन्स जो है किस तरीके के आते हैं, फिर हर 6 महीने में उसमें एक नया अपडेट आ जाता है और नया बेहतर मोबाइल आता है, जाता है, और अच्छे मोबाइल बनते रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो लगातार ये